that, excelling in a career choice? I think the first and most primary thing would be to ensure that I am walking a career path that I am genuinely interested in. Right. Because I can excel at things only that I can give 100% to. If I Right. don't like doing something, if I am not willing to invest all my time in a certain profession or in a certain task, then I will obviously not excel at it. There will be a point where I will fail or where I will just be mediocre. Beautiful. Very, very good. So you are absolutely resonating with the thought process. So once I have identified with that, this is the place where I belong, this is the universe, where I need to be, then the first step towards that is that, you immediately, create an action plan. And the action plan must have these following things. One, that what are the best places to study to really take my career in the right direction. So whenever people are looking at becoming an artist or becoming a filmmaker or a lawyer or a say diplomat or anybody, the first thing that you must look at identifying is that what are the best institutes that will give me a completely different pedestal. And therefore, when we talk of management, we talk of IIMs, we talk of engineering, we talk of IITs and so on and so forth. So what is so important about these colleges? So please understand that these institutions are the places where you are interacting with the best of the best lot. These are the places where you're getting to meet with the best of the best faculties, and these are the places which will allow you to join the organizations which are world class and best of the best organizations. Hence, it's very, very important that the first thing you need to do is that you need to identify what are the best institutions to take your career forward. The second thing is that what are the kind of examinations that I need to clear to be able to part of those institutions. So for example, you are preparing for one such examination. Just help me, what examination is that, and why are you preparing for it? Currently, I'm preparing for CAT. I'm also preparing for a few other exams such as SNAP and ZAT. These examinations will help me be admitted to one of the most excellent and, like you said, really well-known, popular management colleges. The reason I am preparing for this exam is because I feel that I am really good at managing things. I'm really good at organizing, at communicating with people. I'm really good at bringing people's ideas to life. And I feel that that is something that I could see myself doing for the next 40 years. And that's the reason that I'm preparing for this exam, so that, like you said, I can set out on my path of excellence. Beautiful. So, nobody else could have been better for this episode, for this session with Krishna, because you are the live example. You are very clear with what your career goal is. You are very clear which are the institutions you want to target to start your career, to, give your career that kind of take off. You are also very clear the kind of examinations you need to appear, in, and also help me understand what kind of preparations would go in when you need to appear for CAT, ZAT, GMAT and SNAP and so on and so forth. It really depends from person to person, but for most people, you need to have extra help, professional help. You could hire personal tutors, or you could join some sort of coaching, or you could have family members or friends that have given similar exams that can help you. But some kind of a help or some kind of boost from them would obviously encourage you and would guide you to sort of figure out what you need to do, what your weaknesses are, what your strengths are, and how to figure out that entire thing. But Mm. obviously one could also sit and prepare for the exam all by themselves with their own books. And today the internet has so many more applications, you can do it all by yourself as well. But I think the primary concept is hard work and dedication. You'll have to sit at it. For example, I don't like maths, but I have to give quantitative ability. I have to appear for it, and I will have to get good marks at it. So even if I don't like it, I have to work hard at it, and I have to give time to it, even if I don't like it. So I think that is something that's required. There might be a few chapters or topics that you don't really like or that you don't understand extremely well, but you'll have to give time to it.
Beautiful. Very well said, Utkarshini. Very, very well said. Absolutely. So once your goal is really clear in your mind, then to crack that examination, the level of determination will be completely different. And hence, even if you have to do certain things which may not be of your, liking or choice, but it's just a small obstacle to clear, then you need to be strategically preparing for it. And mine was a similar case when I was preparing for CAT, 20 years ago, maybe 23 years ago. And at that point in time, even I was really afraid and scared of QA and DI. And this is one area where my buddies really worked for me very, very well. So one of the tips that I would like to give to all of you would be that always have one study buddy with you. And that study buddy will be somebody who complements your weaknesses. You complement, his weakness, and hence you both complement each other and work together to ensure that you both are, gaining at the end of it, and you both are able to crack the examination. So I had a great friend who was fantastic with the QA and DI. I was great with LR and VA, and hence it worked fantastically for both of us. And we kept pushing and working with each other to ensure that we both come out with flying colors. And that's what exactly happened in our case. So thank you so much. So, first thing first is that you need to ensure that whatever career you're looking at, you need to be qualified in it. You need to be technically, academically, really qualified in it. To be able to do so, you need to target the best institutions in the country or the best institutions across the globe. And to be able to get the admissions into them, it's very, very important that you know the entrance examinations that you need to appear in. And also at the same time, please ensure that you have a very clear plan that you need to study well before that. You need to take professional help. Maybe you need to join some coaching classes. You can go on very many online programs also. And you need to give that due time to the preparation to ensure that your attempt is a worthwhile and you are really, tracking it very well. So these are the steps that one must look at, when you have decided that what is my goal looking like. Because it's not that, you're clear with the goal, but you don't know how to go forward. And how do you ensure that you excel in whatever you have picked up? So most of the time people tell me that, I want to do management and, I think this is the best thing for me, but I don't want to prepare for it. I don't know how to go about it, or which are the institutions to really look forward to. So this is very, very important that if you are in grade 11th and 12th, then you must be very clear that what are the examinations to crack, for what examinations you need to prepare when. I truly believe that minimum of 6 months to 12 months of hard work has to go in before you appear in any of the national entrance examinations. Utkarshini, what do you think? I think that time is a big factor. And like you said, you have to take out that time. And it's not an overnight process. You can't expect to give 12 to 13 hours for just a week and expect to crack an examination. It has to be consistent effort and over a period of time. Absolutely. Beautiful. Very, very good. Yeah. So some of the tips again will be over there, that if you have got, really enough time, then you will be able to strategize yourself very well. So some of the tips over there towards career excellence will be that one, make sure that you are continuously working on your strengths. Your strengths should be completely unbeatable. So for example, if mine were VA and LR, then I used to ensure that every day at least 120 minutes I used to give to VA and LR, so that I know for sure that that's something which is absolutely spot on, and there I am completely unstoppable and unbeatable. At the same time, for example, QA was my weak area, and like yours, I never really felt like doing it by myself. So these are the subjects which you will never pick up on your own. Every time you'll go to study, you'll pick up VA, you'll pick up LR, you pick up the subjects which come naturally to you. So here I will again strongly encourage that, ensure that somebody is there in your life who pushes you to pick up these subjects, who pushes you to manage some bit of targets for yourself every day. And another concept that I want to talk about today, which I strongly profess and advocate all the time, is that make sure that you have your productivity table for every day. I don't believe in timetables. I believe in productivity tables. So Utkarshini, would you be having any idea what is productivity table? I think a timetable really narrows our horizons and requires you to be very strict. Whereas a productivity table is not necessarily a timetable, it's more flexible in that concept. But you have to set a goal for yourself. For example, like you said, that I will sit for 120 minutes
in a day for a particular subject, or I will successfully, you know, solve so many sums from physics or so many sums from math. I think that would be more like a productivity table. Right. So productivity table is nothing else, Utkarshini, beta, where one is mapping the targets. So every day you create a target for yourself. Actually set a goal or set an objective for yourself, and you write it down very clearly. And once you achieve that, you are done for the day. So, for example, today you look at that. I want to clear distance today. I want to clear distance and time today, or I want my goal is to do speed today. So once you are done and thorough with speed, you have done one mock test and you are comfortable and confident about it, then you are done for the day. So now it doesn't matter whether, speed as a topic takes 30 minutes or 300 minutes, regardless, it's immaterial. So you are ensuring that you are creating productivity table, and that is something which is very, very important. Okay. So please ensure that, we create productivity tables. We do not create timetables. मैंने 3 घंटा बैठ के पढ़ा, लेकिन पाया क्या, अचीव क्या किया, no idea. That's not what we should do. We must ensure that we are looking at productivity tables. I hope that's a good help for you as well today. Yeah. Yes, it is. It's a good point to keep in mind. Good point to keep in mind. So absolutely ensure that you have at least 1 or 2 goals every day. And those could be very small goals. And once you're hitting those smaller goals every day, then you will ensure that you are hitting your, goal, which is a bigger goal to crack your CAT. Okay. So now over to you, Utkarshini. Please throw and shoot as many questions as possible that you want to. I'll pick up the first question, which is being repeated many a times in the chat box today. A girl, I think, or some child is asking me, I am good at many things. How do I decide my career? Now, this question I'm being asked many a times, million times, and I would again like to reiterate over here कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें पसंद हैं, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, और आप बहुत सारी चीजों में अच्छे भी हैं. तो पहले तो सबसे पहले ये क्लियर करिए अपने माइंड में कि कितनी सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, वो सब जॉट डाउन करिए. और उसके साथ साथ में ये देखिए कि उन सारी चीजों में से आप कितनी चीजों में अच्छे हैं, फिर उनको आप नैरो डाउन करिए. और फिर उनके कॉम्बिनेशन पे आप ये देखिए कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले क्या चीज है जो आपके माइंड में बार बार आती है. तो फॉर एग्जांपल, आप सिंगिंग में भी बहुत अच्छी हैं, आप ताइक्वांडो में भी बहुत अच्छी हैं, एट द सेम टाइम आपको जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट भी बहुत पसंद है, आप स्टोरीज लिख लेती हैं, आप स्टोरीज बना लेती हैं, आप बहुत अच्छा डिबेट्स करती हैं. हो सकता है ये 3 चीजें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और आप बहुत अच्छा करती हैं. लेकिन आप बार बार देखिए कि आपके माइंड में, आपके जहन में बार बार क्या चीज करने को आता है. So when you're sitting idle every day consistently, when you ask this question to yourself, then how many times, what is it that's coming for the इमीडिएट थिंग जो आपको सबसे पहला करने का मन करता है. अगर कंसिस्टेंटली आप एक ही चीज बार बार पहली बार करने का मन कर रहा है आपका, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं. उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार अगर आप एक अच्छे करियर काउंसलर के पास जाएंगे तो वो आपकी मदद करेंगे कि ये दोनों तीनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ आप एक सिंगल करियर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं. तो वो भी आप देखिए, वो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं. तो प्लीज फर्स्ट identify what are your interest areas, what are your aptitudes, where are your combinations, which combinations you want to really pursue for a long time, which are really making a lot of sense to you, which is really taking you towards excellence. You are creating great benchmarks, you are having wonderful data points that really gives you a lot of confidence to move forward with them. Go ahead and give yourself best in them. Yes, next question, Utkarshini. Yes, sir. We have a question from Aditi. She wants to know, how will the productivity table help one that is giving a time-based exam? For example, NEET. So it's an exam that you have to finish in 3 hours. So how can the idea of a productivity table be applied there? Okay, so productivity table is nothing to do with your speed in an examination. Productivity table is basically a medium or a tool which will ensure that you are prepared for your examination. So it's a tool which ensures that you are on the path towards meeting your everyday goals, which is to clear your examination. So it will ensure that all the topics are covered, they are covered to the T, and you are really prepared for it. At the same time, obviously, when you are giving your mocks, which I assume that you are giving every single week, those mock examinations, your pace in those mock examinations will help you to actually be ensuring that you are fully prepared with your pace
in the final examination. ठीक है? तो have I answered the question, Utkarshini? Yes, sir. All right, next question. Okay. So the next question is, what if our interests change over time? What if I was interested in a certain subject back, say, in standard 10, and now that I am in standard 11 and 12, my interests have changed. So how do I choose my career now? ओके तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि आपका इंटरेस्ट एरिया सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, कभी भी ये गलत है टेक्निकली। आप प्लीज मेरा सेकंड एपिसोड देख लीजिए या फर्स्ट एपिसोड, आई थिंक सेकंड में हमने बात किया था इसमें बहुत डिटेल में। आपका इंटरेस्ट एरिया जो है वो एक एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें आप बार बार एंगेज करना चाहते हैं, और जो सब्जेक्ट है वो एक मीडियम है जो आपको उस इंटरेस्ट एरिया में आगे जाने में मदद करता है, जो आपकी नॉलेज बढ़ाता है उस इंटरेस्ट एरिया को लेकर। तो इट्स अ टूल, इट्स अ एनेबलर, it's a medium which enhances your capability or your abilities in that particular interest area. Now yes, there are possibilities कि आप एक चीज को इंटरेस्ट एरिया समझ रहे थे और वो बहुत जल्दी आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में हम हमेशा ये कहते हैं कि आप साइंटिफिक डेटा एनालिसिस कराइए, आप अच्छे साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स दीजिए और देखिए कि ऐसे कौन से इंटरेस्ट एरियाज है जो बहुत ही रोबस्ट हैं आपके अंदर, जो लंबे समय तक रहेंगे, एंड साइंटिफिकली द डेटा विल टॉक अबाउट दोज इंटरेस्ट एरियाज एंड दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। तो बेटा जी आप जरूर एक अच्छे करियर काउंसलर के पास जाइए और वहां से मदद लीजिए, लेकिन एक सब्जेक्ट जो है वो एक इंटरेस्ट एरिया नहीं है, वो सब्जेक्ट आपको उस इंटरेस्ट एरिया में आगे जाने के लिए मदद करते हैं, इसलिए बार बार आप उस सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, which is a very good thing. Utkarshini, have I answered the question? Yes, sir, you have. Yeah, next question. Okay. So the next question is, on our path to excellence regarding examinations, do books play an important part? Are there certain books that we need to prepare for a certain examination, or we can prepare from any book and still secure really good marks in an examination? So, like I said that, as far as your examinations of schools are concerned, I think stick to the NCERT and CBSE curriculum, and that will ensure that you are securing the highest percentages. As far as the national entrance exams are concerned, I will strongly encourage you to look for professional help out there, look for the expert guidance in those, national entrance examinations, and they will really prepare you on the entire curriculum very, very well. It will be very difficult for me to recommend a particular book for any national entrance examination, because a particular book may work for a particular child, it may not work for B particular child. So please understand that each one of us as learners, we have 3 distinct styles or combination of styles to learn. Should I talk about it, Utkarshini, for a minute? Yes, please. Okay, so see, we can be a visual learner, we can be an auditory learner, or we can be a kinesthetic learner. Okay, so kinesthetic means that I learn better when I'm doing things. Okay, auditory means that I learn better when I'm listening to somebody, or visual is that I really learn better when I look at things being done or things being told. Okay, and also at the same time I could be a combination of both or 3 of them together. So I could be a visual auditory learner, I could be auditory kinesthetic learner, I could be a visual kinesthetic learner, and so on and so forth. So please understand your learning preference, your learning styles, and then pick up the right expert guidance to take you forward. Okay, it's very, very important that you can listen to many podcasts on certain topics. You can look at YouTube videos on certain topics. You can actually do certain things by yourself. You can actually solve the questions, by yourself. And, could be various means and ways, and there could be various combinations. So please practice everything. See what works best for you. Identify what is your most preferred learning style. Identify which is the best learning environment for you. What are your learning preferences? And on the basis of that, crack a entrance examination. If you really want to know what is your learning style, what is your learning preference, what is the best learning environment for you, you can definitely come to us or any great career counselors who actually identify scientifically all these things for you. Okay? Yes, sir. I answered, Utkarshini? Yes, sir, you have. Okay, so the next question is from Saransh, and he wants to know what exactly he can do from, say standard 10 to become an advocate or a lawyer. Which subjects should he take in standard 11 and 12, and how should he start preparing for the exams? Okay, so first of all, Beta ji, congratulations that you have decided to be a lawyer. But again, I'll go back and I'll ask you this question. What made you decide that you want to be a lawyer? What are the things that you believe you have in you which will ensure that you will become a successful lawyer?
Have you looked at a lawyer's life? Have you spoken to some of the lawyers? There are various practices in law. You can be on the corporate side, you can be on the research side, you can be on the practicing side. On the practicing side, again, you can be into civil, you can be into criminal. So there are lots of things to do in law. Please ensure that you have got complete clarity about it. Take some months more, go with a very good level of deliberations, go with very, very well informed choices, look for a lot of information on internet, Google, speak to the best career counselors in the country. Okay, and after that, decide if law is really the best for you. And if it is, yes, then you can pick up humanities or commerce, whatever is your interest, area generated subjects. And wherever you believe that you will enjoy, so pick up the subjects of your choice, and you can go ahead and you can give your national entrance examination of CLAT, or you can go and study LLB and LLM. Again, I am not clear that why you have picked up law, what you want to do. Do you want to go into judicial services, or you want to practice in the court? So if you will talk to me on those lines, I can give you complete guidance on how to go about it. But I have answered your question that what subjects to pick up in 11th and 12th. All right, thank you. Utkarshini, have I answered the question, Beta ji? Yes, sir. Next question, please. So the next question is that if I have excelled in school, then is it necessary that I will be excelling throughout my life? Or in a different case, if I have not excelled in school, is it necessary that I won't ever be able to excel in life? Wow, that's the question of the day. That's the question of the day. That's a very, very beautiful question. Thank you so much for asking that question. And Utkarshini, also, I would encourage you that, maybe in 15 minutes from now, I would like you to pick up 3 or 4 students to, unmute them and give them the chance to speak to me. Okay. Yes, sir. And you can decide and maybe unmute them proactively, and you can tell them. All right. So yes, very, very good question. There is no guarantees that if you have excelled in your academics in your entire school life, you will also excel in your career or in rest of your life. At the same time, there is a absolutely equal opportunity or probability that even if you haven't excelled at all in your school life, you can have a great successful career. Okay. So please ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप academically बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं पूरे तमाम उम्र स्कूल में, तो आप बाकी जिंदगी भी आपकी बर्बाद है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे करियर काउंसलर से मिलेंगे तो वो आपको बहुत सारी अच्छाइयां आपके अंदर, बहुत सारी खासियतें आपके अंदर दिखा पाएंगे, और उनको सही दिशा में किस तरह से इस्तेमाल करना है और मल्टी बिलियन डॉलर करियर में कन्वर्ट करना है, वो आपको जरूर बता पाएंगे, और आप एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन और सफल जीवन जो है वो आगे ले जा पाएंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल भी कोई गारंटीज नहीं है कि अगर आपने 12-13 साल स्कूल टॉप किया है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं एकेडमिकली, बहुत अच्छे स्कोर ला रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होंगे। डेफिनेटली डेटा पॉइंट है जो आपको कन्विंस करता है, प्रूव करता है कि जब आप जो भी कुछ करना चाहें आप अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करेंगे, लेकिन क्या वो गारंटीज लेके आता है? बिल्कुल नहीं। Have I answered the question well, Utkarshini? Or if you want me to, elaborate and take more extra layers on this, I will be happy to explore. Yes, so you should, for those who feel that they're not excelling really well at this point, so that they can get some encouragement to do better in life. जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपने 10th 11th 12th में अच्छा नहीं किया है तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं अगेन आई एम सेइंग दिस कि टुडेज इज द टाइम व्हेन इनफाइनाइट करियर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर ईच वन ऑफ अस। Just start believing in yourself, explore yourself, discover yourself. Last episode देखिए आप हमारा, वो आपको मदद करेगा कि किस तरह से आप खुद को डिस्कवर कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स को आप किस तरह के करियर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वहां पर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप अपना नाम नहीं कमाएंगे, आप शोहरत नहीं कमाएंगे या पैसा नहीं कमाएंगे। सो प्लीज प्लीज इंश्योर कि आप अपने आप को देखें, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आई विल स्ट्रांगली एनकरेज यू चिल्ड्रन दैट whosoever believes or is starting to feel कि मैं स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा हूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मीट अप द राइट गाइज इन योर लाइफ एंड दे विल डेफिनेटली गिव यू द राइट डायरेक्शन। सो प्लीज डू दैट। Yeah. Okay. So the next question is
that is there a certain degree that one should pursue in bachelor's so that they can crack the UPSC exams easier, or they should take up when they are in standard 11 or 12 so that excelling in the UPSC exam becomes easier for them? Sorry, could you repeat the question? Is there a particular degree that one should pursue in that bachelor's? Say, I want to, yes. No. There is no particular degree that you need to pursue to crack UPSC exams. It's a myth that if you pick up humanities subjects, then you will be, easy to crack UPSC. No, I always say pick up the subjects of your choice, the subjects where you belong, the subjects where you really enjoy yourself, because those are the subjects where you will give your best. And you should pick up the same subjects in your mains examination for UPSC to be able to do really well and crack UPSC mains. Okay. So is there some kind of a shortcut or a secret to solving more MCQs in less time? What according to you, you believe there could be secret for that? I think the more you practice, it's all on that. When you see an MCQ, within a few seconds, you should know the answer in your head. And that will only happen when you practice enough. Yeah, so one is that, yes, there are lots and lots of shortcuts which help you to sharpen your mental maths. So there are lots and lots of videos available free of cost to you, on YouTube and on Google. There are lots of, tutorials on the same. Yes, those shortcuts are good way to look at, sharpening your mental maths and hence, to be able to do your MCQs in a shorter time. However, I still believe that, securing or solidifying your concepts, solidifying your fundamentals, solidifying your principles really well is the way forward. तो अगर मैं बहुत ज्यादा वो शॉर्टकट्स या गिमिक्स में नहीं भी दिमाग लगाऊं, लेकिन अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने फंडामेंटल्स को, अपने प्रिंसिपल्स को अगर बहुत सॉलिड कर रहा हूं, तो फिर मैं एग्जामिनेशन में कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी सही अटेम्प्ट करके मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. Yes, sir. So Arshad has a question. He wants to know if some kind of degree is important before one starts a business, or can one start right after standard 12? Okay, so for business, obviously there is no basic qualification really which is mandatory for you to start a business. आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी क्लास के बाद कर सकते हैं, 10th, 11th, 12th, 5th, 6th, 7th. You need to be 18 and onwards. लेकिन मेरा ये फिर भी कहना होगा कि आप पहले ये क्लियर करें कि आप बिजनेस करना क्यों चाहते हैं, किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस एरिया में आपका इंटरेस्ट कितना स्ट्रांग है, आप कितना पैशनेट फील करते हैं उसके लिए, कितना नॉलेज है आपको उस बिजनेस के बारे में. इन सारे सवालों के जवाब आपके पास जरूर होने चाहिए. और उसके साथ साथ में मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई अगर आप कर लेते हैं और अगर आप थोड़ा बहुत भी तजुर्बा अगर लेके आते हैं एक बिजनेस को चलाने का, तो फिर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कोई भी बिजनेस करना. तो मैं हमेशा ये इनकरेज करता हूं कि आप जरूर एक टेक्निकली क्वालिफाइड हो जाइए, एक अच्छी क्वालिफिकेशन लीजिए बिजनेस को करने के लिए. बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप मास्टर्स अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ में थोड़ा बहुत तजुर्बा लीजिए एक बिजनेस को चलाने का, करने का, और उसके बाद आप अपना बिजनेस जो है वो जरूर शुरू कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है. Right, sir. So, sir, can we now start with live questions from students? Sure. Okay. So, Chavi ji, I request you to please unmute Om Prakash. He's had a few very good questions in the chat box. Okay, ma'am. I will do. Thank you. So Om Prakash is unmute now. Good morning, sir. Morning, बेटा. बताइए क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? Sir, I have a question that is there any stream to join raw or any intelligence group? ओके, सो अगर आपको रॉ में जाना है या किसी भी इंटेलिजेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना है देश की, तो उसके लिए कोई स्ट्रीम नहीं है. आप अगेन
यूपीएससी के थ्रू जो है आप जा सकते हैं, आप वो एग्जामिनेशन दीजिए और उसके बाद आप डेफिनेटली जो है वो इंटेलिजेंस सर्विसेज का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए आप 11th और 12th में अगेन अपने पसंदीदा सब्जेक्ट लीजिए, ग्रेजुएशन में भी अपने पसंदीदा सब्जेक्ट लीजिए और उसके बाद जो है आप यूपीएससी एग्जाम्स को जो है वो क्रैक करिए। तो आप डेफिनेटली आपके लिए सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम बेटा जी। यस उत्कर्षिनी। Sir, the next question is from Aviral. So if Chaviji, you could please unmute Aviral. Yeah, ma'am. Aviral can be unmuted. नेक्स्ट 2-3 नाम आप और दे दीजिए बेटा। Good morning, sir. Sir, is my voice audible? मॉर्निंग बेटा। अविरल बोलिए। Sir, I wanted to just ask that I am very passionate towards being an architect, but sir, because it consists math, sir, I am weak in maths. Sir, it's from starting in my whole academics, I have been weak in math, but other subjects are my good. ओके, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा बेटा कि आपने आर्किटेक्ट का डिसाइड कैसे किया है? व्हाट गिव्स यू द कन्विक्शन दैट यू विल बी अ ग्रेट आर्किटेक्ट? व्हाट आर द साइंस व्हिच आर टेलिंग यू अबाउट यू दैट यू विल बिकम अ फैंटास्टिक आर्किटेक्ट? बताइए। Mohan sir, sorry. When I was just in 7th class. Aviral, please just a minute. इस वेबिनार में आज कुछ लोग ऐसे ज्वाइन कर रखे हैं जो स्टूडेंट हैं या जो भी हैं जो एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को प्लीज इतना समझाना चाहूंगी, या तो आप ये चीजें बंद कर दीजिए, वेबिनार लेफ्ट कर दीजिए, अदरवाइज हमें ना चाहते हुए भी आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी पड़ सकती है। सो प्लीज ये सब चीजें इस ओके, ठीक है। this is not Chavi, the you good can thing. just throw them out. Aviral, please continue. Sir, when I was in Yeah. 7th class, I just knew what are the buildings and how we just make it. So, sir, I started discovering, and I even made a research paper on post-modern architecture that is used in Japan. And also, I invented and described the various parts of Burj Khalifa. Sir, what I got to know that the architecture is very good field in which we can invent many different types of things. Even it's just like a chemistry of buildings. Sir, I just wanted to take it, but sir, when I got to know that it requires PCM, so sir, I am very confused how will be I will overcoming the maths. अच्छा, ठीक है, वेरी वेरी गुड। एक तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने बहुत सही तरीके से ये आइडेंटिफाई किया कि आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं और अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं और आपको बनना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीका था कि आपने उसको प्रैक्टिस किया, आपने उसके बारे में रिसर्च की और आपने इनफ ऑफ डेटा कलेक्ट किया कि यस really, should I become an architect or not? So congratulations on that, Aviral. Second thing, yes, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स उनकी वीकनेस है। आप 11वीं और 12वीं में मैथ्स ले सकते हैं और लेकर आप सिर्फ ये कोशिश करिए कि आप 60% के आसपास सिक्योर कर सके बेटा। लेकिन जब एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करेंगे, चाहे वो नाटक की है और चाहे वो स्पा के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है और भी कुछ एग्जामिनेशंस हैं, जब आप उनके लिए तैयारी करेंगे तो वहां पर बहुत टफ मैथ्स चाहिए होगा, वहां के लिए आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। 11th और 12th में आप सिर्फ इतना इंश्योर करिए कि आप 60% जो है वो मैथ्स के साथ ला सकें। और अगेन, जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था, अगर आपके दिमाग में करियर बहुत क्लियर है और गोल बहुत क्लियर है, तो फिर ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, मुश्किलात हैं, ये जरूर जो है आप दूर कर पाते हैं। तो अगर आप इसी पे जब आपको, एक तो बहुत अच्छी चीज ये है कि क्लियर है आपके माइंड में कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरे लिए डेवलपमेंटल एरिया है, इस पे मेरे को मेहनत करना है और बाकी सब चीजें मेरी अच्छी हैं, तो अगर इस एरिया में आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एटलीस्ट अपने गोल को पाने के लिए इसको दूर कर पाएंगे जितना जरूरत है उतना।
और 12th के बाद आगे इसको बहुत ज्यादा दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है बेटा जी। तो जस्ट वर्क हार्ड ऑन योर मैथ्स एंड सी दैट हाउ कैन यू एटलीस्ट सिक्योर 60% इन योर 11th एंड 12th, and at the same time you can prepare good enough maths for the entrance examination. Entrance examination में 10th का maths ज्यादा आता है, 9th 10th वाला। ठीक है बेटा, have I answered your question, Aviral? Yes, sir. Thank you. Any? Yeah, you're welcome, beta. Who is next, Kashini? Chavi ji, could you please unmute Harshvardhan and Gaurav Kumar? Sure. Yes, sure. Go ahead, beta, ask your question. Good morning, sir. Morning, बोलिए बेटा। Sir, can I speak in Hindi? हाँ बिल्कुल बेटा, जरूर हिंदी में बोल सकते हैं, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका बेटा। सर मैं आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो फ्यूचर तो उसके लिए मुझे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका सवाल ये है कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यस सर। यही सवाल है आपका? यस सर। आप कौन सी क्लास में है बेटा अभी? सर क्लास 10th। क्लास 12th? 10th या 12th? सर 10th। 10th में है आप, अच्छा अभी, ठीक है। तो आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। आर्म फोर्सेस में आपने आर्मी ज्वाइन करने का डिसाइड किया है या एयर फोर्सेस और नेवी भी चलेगा? सर मोस्टली नेवी और आर्मी। आर्मी और क्या कहा आपने बेटा? सर नेवी, आर्मी और नेवी। आर्मी और नेवी सर, नेवी। नेवी, ठीक है। तो अगर आप एयर फोर्सेस और नेवी में जाना चाहते हैं तो फिर आपको 11th में पीसीएम लेना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ आर्मी देख रहे हैं तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज से भी चलेगा, लेकिन आपको 12th के बाद एनडीए का एग्जामिनेशन देना चाहिए, जो आपके लिए ऑफिसर्स कैडर खोल देगा और आपको हाईएस्ट रैंक तक पहुंचने के लिए जो है वो सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो प्लीज आप 11th के बाद से 12th के स्टार्ट में आपको एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस भी चेक होता है। तो इन तीनों चीजों पे आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 साल की मेहनत करिए और आपको 2 से 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। सर्टेन एज क्राइटेरिया होता है, 18 क्रॉस नहीं कर सकते आप। और आप इंश्योर करिए कि आप अपना बेस्ट दें और एनडीए के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। You will join IMA for your trainings and then the universe is yours. Wish you all the best and loads of success, बेटा। ठीक है? Sir, how much mark need to join Indian Army? Sorry? सर कितने मार्क्स चाहिए आर्मी को ज्वाइन करने? क्या क्वेश्चन है बेटा? कॉमर्स? सर मार्क कितनी चाहिए ज्वाइन होने के लिए? हेलो। हाँ मैथ्स चाहिए होगा बेटा, मैथ्स जरूर चाहिए होगा। मैथ्स इंपॉर्टेंट है, पीसीएम आपको नहीं लेना। सर पीसीएम आई थिंक ना उनके तरफ से ना कनेक्शन एरर है। वो क्या? पूछ रहे हैं कि कितने मार्क्स स्टैंडर्ड अच्छा। 12 में कितने मार्क्स लाने होंगे। Okay, 60%. Just get 60%. That's fine. That's good enough. सर इन 10th 10th में आप जितने भी ला सकते हैं आपको लाना चाहिए बेटा। मार्क्स तो देखिए, मैं अगेन बार बार कहता हूं कि आपका फोकस मार्क्स नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि इन सब्जेक्ट्स में मैं अपना नॉलेज कितना बढ़ा सकता हूं, कितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ऐड कर सकता हूं, एग्जामिनेशंस को कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे आएंगे। तो अगर आपको पीसीएम लेना है तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो रोक देंगे। तो इसलिए प्लीज इंश्योर करें कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आए 10th में भी। सर पीसीएम मतलब? सर पीसीएम मतलब? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर पीसीएम मतलब? Sir, I have a question, sir. Good morning, sir. Okay. Yes, Harshvardhan. Sir, my question is, I'm a medical student
I'm in 12th, so I wanted to ask, as there is online classes going on, there is a little sense of self-doubt in every student, I feel. I wanted to ask, can you suggest some alternate streams if we wanted to go on with the medical career or the subjects we are studying right now? ठीक है बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा जी. ओके, सो वन थिंग लेट मी क्लैरिफाई. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये ऑनलाइन स्टडी और ये सब कुछ से सेल्फ डाउट बिल्कुल मत क्रिएट करो. डोंट डू दैट एट ऑल. और दूसरा चीज ये भी आप लिमिट मत करिए अपने आप को कि मैं मेडिकल स्ट्रीम में हूँ. ये भी एक गलत कॉनोटेशन या इंटरप्रिटेशन है आपके सब्जेक्ट्स का. लोग कहते हैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम, ये सब नहीं है. आप बोलिए कि मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और मैं मेडिसिन करियर को आगे लेकर बढ़ना चाहता हूँ. इज दैट द केस, हर्षवर्धन? Yeah, sir. All right. So It's not that I want to continue, I want to know the alternate options also. हाँ, अगर अब आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस जानने हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एक अच्छे करियर काउंसलर से बात करना चाहिए. आपको अपने आप को डिटेल में स्टडी करना चाहिए. फर्स्ट 2 एपिसोड जाके देखिए, अगर आपने मिस कर दिए. उन सब चीजों को आप एक्शन में लाइए और देखिए कि क्या आपको क्लैरिटी आती है कि आप किस तरह के करियर्स के लिए बने हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए. और अगर वो क्लैरिटी खुद से आ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो आप एक अच्छे करियर काउंसलर के पास जाइए या हमारे पास आइए और हम साइंटिफिकली आपको हेल्प करेंगे कि आप कहाँ के लिए बने हैं और आपको कहाँ जाना चाहिए. और अगर मेडिसिन निकल के आता है तो भी हम आपके लिए बहुत सारे रास्ते बता सकते हैं. तो डोंट वरी अबाउट इट. इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग दिव्यांशी जरूर मिल सकती है आपको. ये सारे के सारे सेशंस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं फुल मार्क्स के. आप प्लीज फुल मार्क्स के यूट्यूब चैनल पे जाइए और आप ये सारे सेशंस को सुन सकते हैं पूरी तरह से आराम से, एट योर पेस, एट योर लेजर एंड प्लेजर. So please go ahead and do that. Sir, one more question. हाँ हर्ष, बोलिए बेटा. So you said about self-doubt that we should not bring that. It's a part of, I think it's a part of our life, sir, that there is a sense of self-doubt and we hesitate to put our problems. Can you say something that can motivate or encourage us to remove that small part? श्योर, बिल्कुल मैं जरूर कहूंगा बेटा. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन हर्ष. और ये आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों की हेल्प करेगा बेटा. तो देखिए, सेल्फ डाउट बच्चे कब आता है? सेल्फ डाउट तब आता है जब आपको पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. क्योंकि बहुत बार आप बहुत सारे काम दूसरों के कहने से कर रहे हो. तो मेरा अगेन बार बार ये कहना होता है कि प्लीज 10th 11th 12th इज गुड इनफ टाइम वेयर यू शुड नो एग्जैक्टली हु यू आर, what you really need from your life. Are your actions aligned towards exactly what you want to achieve in your life? You should not be doing certain things for the heck of doing, or you should not be doing certain things because your parents are saying or your peers are doing. You should be really clear with who you are, what you are, and then your self doubt, your all the jitteriness, all the confusions and the cloudiness will go away. तो खुद पे विश्वास अपने आप आना शुरू हो जाएगा जब आपको पता होगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके अंदर से आ रही हैं वो चीजें, और आप बहुत बढ़िया उसमें कर सकते हैं. आपके पास क्लैरिटी भी है, आपको पता है एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो फिर ये सेल्फ डाउट्स खत्म हो जाते हैं बेटा. ठीक है हर्ष? Sir, how about the parental pressure we face? पेरेंटल प्रेशर्स के लिए प्लीज अपने पेरेंट्स को एजुकेट करिए, उनको हमसे मिलवाइए. बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वो दिखाइए और उनको बताइए कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स माय लाइफ एंड इफ आई एम नॉट एंजॉयिंग इट, इफ आई डोंट वांट टू लीड दिस काइंड ऑफ लाइफ, देन व्हाट्स द पॉइंट. और at the end of the day they also want your happiness. Please understand कि बहुत बार पेरेंटल प्रेशर्स जो हैं वो हो सकता है गलत है, लेकिन पेरेंट्स का जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सही है. पेरेंट्स ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर यू, पेरेंट्स आर ऑलवेज थिंकिंग इन योर बेस्ट इंटरेस्ट. लेकिन हो सकता है उनका अप्रोच शायद करेक्ट ना हो. तो आप उनके साथ बैठिए, डिस्कस करिए, एग्जैक्टली उनको बताइए कि आपका दिमाग क्या कहता है, आपके अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, उस दिशा में क्या डेटा है, किस तरह के करियर्स हैं. उनको एजुकेट करिए, अवेयर करिए. आई एम श्योर दे विल बी विलिंग टू लिसन टू यू, बट दे नीड टू बी गुड इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस. Thank you sir. Sure sir, thank you sir. It was remedial. Thank you so much. Yes Shreyas, बोलो बेटा. श्रेयस सागर बोलिए. Excuse me sir, it's Prakriti, can I speak? All right, go ahead बेटा, go ahead, tell me. सर एक्चुअली मैं 10th में पढ़ती हूँ और मेरा गोल है मुझे पीसीबी लेना है.
So, sir, can I go for medical? Actually, my goal is to be a pediatrician. How did you decide to be a pediatrician? Sir, आप actually, बच्चों it's my dad's goal, sir. So I wanted to fulfill my dad's goal. ओके ये यहीं पर मेरा डिस्कनेक्ट है बेटा जी आपसे कि आपके डैड का गोल आपका गोल तभी हो सकता है जब आप एग्जैक्टली फुल्ली अलाइंड हो उस गोल से। आपका इंटरनल सिस्टम, आपका इंटरेस्ट एरियाज, आपका एप्टीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी वो बिल्कुल क्लियरली उस गोल को रीच करने में, उस गोल को सक्सेसफुली आगे ले जाने में सक्षम हो, बनी हुई हो। अगर वो डिफरेंट है तो प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ हु यू आर, व्हाट यू आर, और अभी से करेक्ट कर लीजिए अपने गोल्स, जिससे कि लाइफ में आप लोग खुश रहें और डेफिनेटली सफल रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स का एक गोल है और वो कहीं से भी आ रहा है विदाउट थिंकिंग अबाउट हु द चाइल्ड इज रियली एंड व्हाट द चाइल्ड इज ऑल अबाउट। सो प्लीज एंश्योर दैट दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट एज. Identify with who you are, what you are, and help your parents, see through who you are exactly. And both of the parents should be completely, in alignment to understand who you are, what you are, and then decide what is the best thing. No, बहुत actually, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपसे मिलवाना है। 1 सेकेंड, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि आपसे मिलवाना है सर। मुझसे जरूर मिलवाइए अगर जरूरत है तो। I am, in Delhi, and I go to many cities across the country. I go to many schools across the country, but my offices are in Delhi. You can Google us, studentsdestination.com. Reach out to us, take the appointments, and I'm happy to help any and every child. So don't worry about it at all. हाँ बेटा, next question. बोलिए। Good morning, sir. Sir, actually, I want to be in a medical field. Actually, we are middle people, so it's difficult to go to other countries. So as a medical field, which I can do, so I'm selecting that. And by the way, my goal is to do PhD in Canada. So will it suffer me, sir, taking medical as well as PhD in Canada? ये दो बहुत अलग चीज हैं, बहुत ही अलग। एक पीएचडी इन कन्नड़ लैंग्वेज एंड बिकमिंग अ पीडियाट्रिशियन, ये दोनों एक साथ आप डेफिनेटली नहीं कर सकते, बहुत ही डिस्टिंक्ट है ये। आई थिंक यू रियली नीड हेल्प, यू रियली नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, somebody needs to work with you to really decide what is best for you. Again, children, please understand, career is very important decision of your life. It will impact your coming 60, 70, 80 years. Do not take it on any fancy, any whim, any myth. Please work on yourself, work really hard, understand yourself, and then pick up your career. Okay, it's a process of months and years. Take that kind of time. Yes, beta ji, next. Who is this? Pari. Yeah, Hello, go sir. ahead. Hello, sir. Good morning, sir. What about UPSC examination? Sorry beta, Tarzan, I'll come to you. Pari, बोलो क्या question है आपका? Sir, what about UPSC examination? या क्या, what about UPSC? पूछिए क्या question क्या है आपका UPSC को लेकर? How to prepare for that? How to prepare? अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 10th. अभी आप बहुत जल्दी है बेटा, 10th में आप, ये ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में प्रिपेयर करना है आपको। आप अभी सिर्फ ये फोकस करिए कि 11th में आप क्या सब्जेक्ट्स लेंगी, क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा एंजॉयमेंट देंगे, जो आपको बहुत क्यूरियोसिटी आपकी जो है वो किल करेंगे, जो आपको रियली एक फर्दर नॉलेजेबल इंसान बनाने में हेल्प करेंगे। आप अभी 11th के सब्जेक्ट पे फोकस करिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन 12th के बाद बात करेंगे बेटा इसके बारे में। टू अर्ली टू आस्क फॉर इट राइट नाउ, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द होल प्रोसेस कि यूपीएससी में कैसे जाते हैं, क्या होता है। तो यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट फर्स्ट बिफोर दैट। ओके, सो लुक एट ऑल द अदर एपिसोड्स, एंड आई हैव डन मेनी रेडियो प्रोग्राम्स एंड यूट्यूब वीडियोस ऑन यूपीएससी, सो प्लीज गो एंड गूगल देम। यस टार्जन, ओह व्हाट एन इंटरेस्टिंग नेम। पूछिए भाई क्या सवाल है आपका? Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए बेटा जी। Yes, I want to ask, sir, that my aim is to clear UPSC exam, but we have to back up also, plan B also, sir. अच्छा, तो पहले तो आपने यूपीएससी करना है, ये कैसे डिसाइड किया, ये भी मुझे क्लियर करिएगा पहले तो, कि यूपीएससी क्यों करना है, बताइए। Sir, it's my dream. अरे ड्रीम कहाँ से आया भाई? किसी दिन रात को आप सोते में ड्रीम आपने ले लिया, ये बार बार आ रहा है ड्रीम, या क्या है इसका कारण? क्या किसी पंडित ने कहा, आपके पेरेंट्स ने कहा, कहाँ से आया ये? Sir, because IS has the diversity of work, so I want to work with the people.
अरे लोगों के साथ काम करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन बी अ ब्रिलियंट सोशल एंटरप्रेन्योर, यू कैन बी अ ग्रेट सोशल वर्कर, यू कैन बी अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ ग्रेट लॉयर, यू कैन बी अ ग्रेट डिप्लोमैट, यू कैन बी अ फैंटास्टिक इकोनॉमिस्ट. आप लोगों के साथ बहुत तरीके से काम कर सकते हैं. एक आईएएस ऑफिसर के Sir, but in IS officer, there is a diversity of work, sir. अरे बहुत डाइवर्सिटी है बहुत जगह पे. तो थोड़ा क्लियर करिए भाई, आपको आईएएस ऑफिसर क्यों बनना है. मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये आपको अभी से आगाह करना चाहता हूं कि ये डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के लीजिए. ये सिविल सर्विसेज ऑफिसर के करियर दिखते बहुत ग्लैमरस हैं, बहुत रोजी हैं, बहुत सेक्सी हैं, लेकिन आर दे रियली दैट ग्लैमरस? There is a lot of hard work, there's a lot of hardship, there's a lot of struggle, there is lots behind the scenes. So meet up the right officers, look at their life, read on many IAS officers, and then see exactly whether you have those kind of skill sets, you have those competencies. Are these the real causes that you want to address? Is this the exact life you want to lead? ये पहले अपने सवालों के जवाब ढूंढिए आप बहुत अच्छे से, उसके बाद डिसाइड करिए. और अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर बैकअप प्लान कुछ नहीं होता है. आई डोंट बिलीव इन प्लान बी, क्योंकि जब जब मेरे दिमाग में प्लान बी होगा तो मैं अपना 200% नहीं दूंगा प्लान ए को, क्योंकि हमेशा मेरे दिमाग में ये रहेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा, वो नहीं हुआ तो कुछ और होगा. तो आई डोंट बिलीव इन प्लान बी, आई ओनली बिलीव इन प्लान ए. ये नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा. तो इसको मुझे सक्सेसफुल बनाना ही बनाना है. इफ यू गो विद दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, इफ यू गो विद दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, तो पहला अटेम्प्ट नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा अटेम्प्ट में आप पक्का बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बन ही जाएंगे और आप यूपीएससी क्रैक कर ही लेंगे. तो डोंट वरी अबाउट इट. उत्कर्षणी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. Sir, what can be the answer of? Yes, who is this? Sir, Tarzan, sir, what can be the answer of why do you want to become IS officer? Hello, sir. इसका आंसर कुछ नहीं है बेटा. इसका आंसर जब आप मुझे देते हैं ना, तो मुझे आपके एक एक शब्द में जवाब दिखता है, वो अभी नहीं दिख रहा है. जब वो सही कारण मुझे दिखाई देगा तो मैं जरूर आपको बहुत एनकरेज करूंगा, ठीक है ना. वो अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ऑनेस्टली. Sir, what can be your आपको answer पता on नहीं है this एग्जैक्टली कि वो एक लाइफ में होता क्या है उसके. तो आप वो जरूर उस पर मेहनत करिए. अभी आप आईएएस ऑफिसर्स की लाइफ को स्टडी करिए, उनसे मिलिए, बात करिए, उनके यूट्यूब वीडियोस देखिए. बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स की किताबें हैं, उनको पढ़िए और फिर समझिए कि एग्जैक्टली किस तरह की जिंदगी होती है और क्या वो आप रियली जीना चाहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Good morning, sir. One second, Utkarshini, go ahead, please, beta. Good morning, So there sir. is a repetition of this question. Hmm. Whoever it is, just wait a few minutes. So there is a repetition of this question. Students want to know what exactly is the exam that they will have to give to become a commercial pilot, or what the subjects are they will have to take in standard 11 and 12 to appear for said exam. Okay. तो कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको पीसीएम लेना होता है और मिनिमम 60% इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में सिक्योर करना होता है 12 स्टैंडर्ड में. और उसके साथ साथ कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना होता है. और उसके लिए जो है हिंदुस्तान में 2 फ्लाइंग एकेडमीज हैं. आप दोनों फ्लाइंग एकेडमीज का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं. एंट्रेंस एग्जाम में रिटन एग्जाम भी होता है और एक सिमुलेशन होता है जो आपको देना होता है. तो अगेन आप जो है एक अच्छे करियर काउंसलर से बात करिए, वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे. या आप गूगल पे या यूट्यूब पे फ्री इंफॉर्मेशन भी इनके बारे में ले सकते हैं कि आपके कमर्शियल पायलट किस तरह से बन सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. हैव आई आंसर्ड द क्वेश्चन उत्कर्षिनी? Yes, sir, you have. या यस. नेक्स्ट कौन क्वेश्चन पूछ रहा था बेटा? Yes, sir, I have a question. Can I? हाँ बोलिए आयुष, गो अहेड. Sir, presently I am a student of class 11th and I have taken PCM stream just because from class 6, or you can say just when I was a kid, my father usually he was working on computer and I used to play computer games and see a lot of videos. So from that time I got interest in computers. So my dream is to do computer science. That's why I have taken this stream, and even this PCM stream got very fascinating to me, and even I don't take pressure of any of these subjects, and even eventually I get very good marks. Then sir, what can be my main aim so that I can get into IIT? Just because if I will not get, then sir, what can be my second plan B? अच्छा, प्लान बी कुछ नहीं है.
प्लान ए बहुत क्लियर है कि कंप्यूटर साइंसेज में आप अपने आगे जाइए, लेकिन कंप्यूटर साइंसेज में बेटा डिसाइड करिए, अभी समय है आपके पास, आप डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप डेवलपमेंट काम करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, या डिजाइन में जाना चाहते हैं? डिजाइन में भी बहुत सारे फील्ड्स खुलते हैं, गेम डिजाइन है, नेटवर्क डिजाइन सर है। जनरली रिलेटेड टू गेम डिजाइन्स। हाँ, तो अगर गेम डिजाइन है तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको आईआईटी में ही जाना पड़े। गेम डिजाइन के लिए आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं। आपको एआई जेई के साथ साथ यूसीड के भी एग्जाम्स देने चाहिए, और वो आपके लिए बहुत सारे डिजाइन इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी खोल देगा, तो यूसीड का आप जरूर दीजिएगा। और तीसरा, अगर आप बीसीए कर सकते हैं, बीसीए करके आगे बढ़ सकते हैं, या आप अपना ग्रेजुएशन इन वेब डिजाइन, गेम डिजाइन, एनिमेशन, मल्टीमीडिया ये भी कर सकते हैं, और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। डोंट वरी अबाउट इट, प्लान बी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। Plan No, A sir, I was just not making plan B, but someone told me one day that if you will not get a perfect rank, for example, for getting into CS, it comes under the highest rank. So if I would not get that some lowest rank I would get, but still I am going to IIT, then I have to change my stream. Then that was my question, that I have interest in this, then I would lose my interest and go into another mechanics or something. So that नहीं, वो was my बिल्कुल मत problem. करिए, वो बिल्कुल मत करिए। पहली बात। दूसरी बात कि जो आईआईटी का सीएस का जो करिकुलम है, वो ये गेम डिजाइन के करिकुलम के साथ मैच भी नहीं करता है, तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रीम्स भी हैं आज की तारीख में। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस डिजाइन एज अ ब्रांच, एज अ स्ट्रीम अलग से जो है वो देते हैं, सीएस के अंदर नहीं आता है वो। So please don't get confused out there. So talk to some experts like me, and they will really help you in details, okay, about which are the best colleges apart from IITs, and design colleges to help you to achieve your goal. ठीक है? Okay, thank you, sir. You are welcome, beta ji. Next question, please. Yes, sir. I have a question. Yes, tell me. Kaka. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बोलिए. Sir, I want to ask you for advocate, what can I take on 11th? अभी मैंने जवाब दिया बेटा इसका थोड़ी देर पहले, आप फिर दोबारा वही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, आपको लॉ ज्वाइन करने से कोई नहीं रोकता है। आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी और आगे। यस, या यू वेलकम बेटा। नेक्स्ट, उत्कर्षिनी, हु इज नेक्स्ट? Sir, the next question is. So the next question is from Aisha. She wants to know that can she pursue BCom and CA simultaneously? देखिए, डुअल डिग्रीज इंडिया में डेफिनेटली अवेलेबल हैं कई सारे कॉलेजेस में। आप देखिए कि कौन से 2 सब्जेक्ट्स में आप करना चाहती हैं डुअल डिग्री, या आप एक ही सिंगल ग्रेजुएशन में ये दोनों चीजें भी कर सकती हैं। तो पहले आप सब्जेक्ट डिसाइड करिए, बीए बीकॉम से कोई मतलब नहीं है। आप सब्जेक्ट्स बताइए कि क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहती हैं, और क्या वो सारे सब्जेक्ट्स आपको एक कोर्स में मिल जाएंगे, ये आपका सवाल होना चाहिए। और मेरा जवाब है हाँ, मिल जाएंगे आप। So BCom और CA करना चाहती है वो। Oh, I'm sorry, CA. Okay. Yeah, one can do it together. Obviously, one can do it together. आप अपना जो है एंट्रेंस एग्जाम देते रहिए और साथ साथ में आप अपना ग्रेजुएशन करते रहिए। 90 से ऊपर % के बच्चे जो हैं हिंदुस्तान में ये साथ में करते हैं। Sorry, Utkarshini, I didn't understand your question. It's okay. So the next question is, a lot of students want to know how they can get internationally placed after finishing their bachelor's or their master's. इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो है वो फिलहाल हर अच्छे कॉलेज के होते हैं। तो अगर आप टॉप कॉलेज का हिस्सा बन रहे हैं अपनी फील्ड में, तो वहाँ इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स आपको जरूर मिलेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ही इंटरनेशनल प्लेसमेंट मिलते हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस से भी मिलते हैं, लॉ कॉलेजेस से भी मिलते हैं, डिजाइन कॉलेजेस से भी मिलते हैं, फैशन कॉलेजेस से भी मिलते हैं, आर्ट कॉलेजेस से भी मिलते हैं, फोटोग्राफी कॉलेजेस से भी मिलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, सब में इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स मिलते हैं। तो प्लीज, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ याहू, गूगल और अमेज़न ही देते हैं। Sir, I have a question. I am in class 11 and I have opted for PCB. Sir, my aim is to clear AIMS Delhi, sir, and I am doing in a currently a schooling, sir. So should I continue it with? I want to clear in the first attempt, sir. जी जरूर, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, स्कूलिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप स्कूलिंग के साथ नहीं कर पाएंगे।
आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। मैंने आज के सेशन में शुरुआत में 15-20 मिनट सिर्फ इसी के लिए लगाया था कि अगर आप क्लियर है कि आपको कहाँ जाना है तो फिर उसके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, आपको अपने करियर में एक्सेल करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो अगर आप दोबारा से देखेंगे इस सेशन के शुरुआत में मैंने जो बात कही है, तो आप क्लियरली उस तरह से अगर प्रिपेयर करेंगे तो आप अपना एम्स है और चाहे वो नीट है, आप डेफिनेटली जो है वो आप क्रैक कर पाएंगे और क्लियर कर पाएंगे। सारांश गुप्ता को अनम्यूट कर दीजिए, बहुत देर से वो क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहा है। Sir, means I at this pandemic, sir, there is no any coachings are available, sir. So I am doing some online coachings, sir. Should I continue because online coachings are going too faster, sir, than the offlines? बेटा देखो, अगेन मैं बार बार यही कहूंगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है उससे मतलब नहीं है। आप देखिए कि जो आप हर दिन अपने लिए मकसद बनाते हैं, हर दिन आपका उद्देश्य होता है कुछ टॉपिक को क्लियर करना या टॉपिक का सब टॉपिक क्लियर करना, क्या आप वहां पर सही दिशा पे चल रहे हैं? अगर आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के करना चाहते हैं तो करिए। आप अपना गोल क्लियर करिए कि हर दिन मेरा गोल क्या है, और वो अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे तो फिर आप एम्स या नीट या कुछ भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप अपने एवरीडे गोल्स को फॉलो करिए, एवरीडे गोल्स क्रिएट करिए पहले तो क्रिएट योर एंटायर प्रोडक्टिविटी टेबल फॉर नेक्स्ट 2 months, 3 months, 4 months, whatever is the time available to you. All right, beta ji? Yes, sir. Sir, my elder brother is also wanted a question. Sorry? Sir, my elder brother also wanted to ask you a question. elder brother, चलिए फटाफट बोलिए क्या क्वेश्चन है, प्लीज बोलिए। Sir, I want to clear the UPSC exam. So should I make the strategy after the 12th standard, or we should make the strategy after the BTech or graduation? आफ्टर ट्वेल्थ आप जब ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हैं कि किसमें करनी है, और ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर के बाद आप यूपीएससी की स्ट्रेटजी बनाना शुरू करें। Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, next question. Sir, what are the career opportunities to pursue bachelor's in English? Hold on, guys. So many people talking to me. Please, one person at a time. So, what are the career opportunities if we pursue English honors? अगर आप इंग्लिश ऑनर्स परस्यू करती हैं तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं आपके लिए। एक तो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टीचिंग लाइन में है, उसके अलावा कम्युनिकेशन को लेके बहुत सारे करियर्स खुल जाते हैं। एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, कंटेंट है। I would say, in content, again, you get the entire media industry, happening for you, the entire web industry happening for you. So lots and lots of career choices open for you. As far as language is concerned, you can be, a translator, you can be, working on research, you can be becoming a scholar, you can be becoming a teacher, professor. So lots and lots of opportunities for you after, pursuing expertise in a language or excelling in a language. Next question, please. Sir. Sir, I have a question. Sir, hello, sir. हाँ दीक्षा बोलिए बेटा। Sir, I have a question. So I want to be a lawyer. So what will be the steps and which course will be better for me? एक क्वेश्चन मैंने अभी आंसर किया बेटा थोड़ी देर पहले। आप प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा सुनिए, आपको ये सारा जवाब मिल जाएगा। To become a lawyer, how to become a lawyer, what subjects and what examinations and everything, आप जरूर देखिए। Okay? So I have a question. Yeah, Piyush, go ahead. Sir, I want to join Merchant Navy. Give me some guidance. मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों डिसाइड किया है, क्या जानकारी है आपके पास मर्चेंट नेवी को लेकर? Sir, it's my passion. कैसे पैशन कहाँ से हो गया भाई? आप क्या बहुत जहाज में घूम रहे हैं, बहुत समुद्रों में गोते लगा रहे हैं, कैसे आया पैशन ये? Sir, I want to do it. बोलिए भाई। Sir, I want to do it. नहीं, कैसे डिसाइड किया आपने? मर्चेंट नेवी जो है वो 12th के बाद आप एज ए डेक कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको चीफ कैप्टन ऑफ द शिप बनना है तो डेक कैडेट से आप 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, ऐसे आप जा सकते हैं। मैंने कंप्लीट मर्चेंट नेवी के सारे ऑप्शंस आई थिंक लास्ट एपिसोड में या उसके लास्ट एपिसोड में बात की थी, और
उसके अलावा आप इंजीनियरिंग करके भी जा सकते हैं. यू कैन बिकम अ मरीन इंजीनियरिंग, यू कैन डू aeronautical engineering, you can do the courses in traffic and signals and so on and so forth, and you can join merchant navy in many ways. All right, thank you. Next question please. Sir, I have a I question. have a question. Thank you, I sir. have a question. Thank you, sir. I have a question. Sir, I have a question, sir. Yes, विशेष, go ahead. नहीं, कोई और विशेष बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? Sir, which stream or which goal is best except UPSC or IIT? Hello. मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. उत्कर्षणी, any question that you want to pick up for me, बेटा? Which goal or which stream is best except IIT or UPSC? मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा बेटा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज. So her question is that which are the streams that are best except the traditional ones, which is IIT or medical or UPSC. Yes. और बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. अगेन बेटा, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन टेल यू ऑफ द एयर. एकदम से ऐसे हवा में नहीं बोल पाऊंगा. जब तक हम आपको स्टडी नहीं करेंगे डिटेल में, जब तक हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस नहीं करेंगे, हम कुछ भी पुख्ता नहीं कह पाएंगे. और बहुत सारे स्ट्रीम्स, बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ खास है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है. आप देखिए कि आपके अंदर क्या खास है और क्या अच्छा है, और फिर एक एक्सपर्ट के साथ बात करिए. वो आपकी हेल्प करेंगे कि कौन से करियर में आप जाएंगे, तो आप जो है वो बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, और आप खुश रहेंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारी सफलता हासिल करेंगे. हर करियर में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो यू कैन रीच न्यूअर हाइट्स, यू कैन क्रिएट न्यू बेंचमार्क्स, यू कैन क्रिएट बिलियंस ऑफ डॉलर्स. So no industry is bad, no career is bad, no career is small or big, no career guarantees you X money. You are the one who decide exactly what you can do with that career, what kind of money you can make, what kind of heights you can touch. It's all on you. Sir, for example, my interests in subjects are maths and physics. So which stream is best for me? आप फिजिक्स को लेकर आगे बढ़ सकती हैं, बहुत सारे करियर्स खुल सकते हैं. मैथ्स को लेकर बहुत सारे करियर्स खुल सकते हैं. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथ्स नहीं हो सकता, इंटरेस्ट कुछ और है. उन इंटरेस्ट को आगे ले जाने के लिए फिजिक्स और मैथ्स आप पढ़ सकती है. तो फिजिक्स में आपको क्या पसंद है वो देखिए पहले, कि फिजिक्स में कौन सा हिस्सा है जो आपको अट्रैक्ट करता है. मैकेनिक्स अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशन अट्रैक्ट करता है, यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है, आपको क्या अट्रैक्ट करता है फिजिक्स में, तो वो आप समझिए पहले कि बहुत सारी चीजें हैं. So first identify who you are. Thank you. Yes, yes, yes. एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि I want to be an archaeology student. How do I go about it? ये मैं आंसर दे देता हूँ कि अगर आपको आर्कियोलॉजिस्ट बनना है तो आप डेफिनेटली अपना बैचलर्स और मास्टर्स आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आप कर ले जा सकती हैं आगे. और हिंदुस्तान में बहुत सारा काम हो रहा है इस फील्ड में. बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं. टेक्नोलॉजिकल ऑफ इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं. So you can be a part of a lot of curation of history. So yes, interesting career choice, great career choice. Go for it, I will say, and do enough of study about various courses available in India, and in a lot of universities in India are offering great programs to enable this career choice. So wish you all the best, beta. One last final question, beta. खत्म करना है. Last two questions. Excuse me, sir. Last two questions. Excuse me, sir. Sir. Excuse me, sir. Sir, I am a biologist. Sir, excuse me, sir. One second. खुशी के बाद रोहित आपसे बात करूंगा. खुशी बोलो बेटा, what's your question? Okay, Rohit, go ahead. Good morning, sir. What? Afternoon हो गया बेटा. Sir, I am in 12th and preparing for JEE mains and advanced. As I have taken online course in 12th, sir, but due to this COVID, my 11th is not up to the mark, so I have to do 11th and 12th both simultaneously. So how to
increase the sitting hour and how to manage both 11th and 12th, because I have made many timetables but I am unable to follow the full timetable. देखिए बेटा, ये चीजें इसलिए होती है कि दो कारण है। एक तो ये कि आपका जो गोल है वो आपके यहाँ से और यहाँ से कितना जुड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये गोल मेरा अपना होगा, इट इज माई गोल, you know, the whole responsibility and accountability is very different. So is it really my goal, or is it coming to me because of society, parents, or wherever somebody else, and I will not be driven enough towards it. So my self drive and my self motivation will not be enough to really make it happen. Question number 1, इसका जवाब आप ढूंढिए। दूसरा जवाब ये है कि टाइम टेबल्स बनाना बंद कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा, आज भी सेशन की शुरुआत में मैंने टाइम टेबल्स को लेकर बात करी है। अगर आप नहीं थे तो आप प्लीज दोबारा जाइए यूट्यूब पे और देखिए। मैंने कहा प्रोडक्टिविटी टेबल्स बनाइए। आप हर दिन की प्रोडक्टिविटी डिसाइड करिए अपने लिए और वो प्रोडक्टिविटी मीट करिए। दैट विल एंश्योर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर वॉकिंग द पाथ ऑन द राइट पेस। तो आपका पेस भी सही है और आपका ट्रैक भी सही है, ये दोनों को इंश्योर करता है प्रोडक्टिविटी टेबल। तो आप प्लीज ये जरूर ध्यान में रखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो बहुत बार जब बच्चे जो है डिटरमिन नहीं होते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती है, उनके अंदर से नहीं आता है, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। One last final question. One more. Sorry, sir. I have a question. Sir, I have a question. बोलो सारांश, बोलो फटाफट। I want to join a police job. Can you give me a guidance? What can I do? पुलिस जॉब? Yes, sir. अरे तो इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करिए, यूपीएससी क्रैक करिए और आईपीएस ऑफिसर बनिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो उसके अलावा दूसरे भी तरीके हैं। आप शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएसबीज, एसएससीज की तैयारी कर सकते हैं। आप उसके अलावा जो है पुलिस में और बहुत लेवल्स पे भर्तियां होती हैं, वो आप एएसआई के एग्जाम्स दे सकते हैं। आप उसके अलावा जो है डिफरेंट लेवल्स पे जो है एग्जामिनेशंस होते रहते हैं, वैकेंसीज खुलती रहती है, वो आप दीजिए। लेकिन अगर आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं पुलिस सर्विसेज में, तो यू हैव टू क्रैक यूपीएससी एंड यू हैव टू ज्वाइन आईपीएस सर्विसेज। उसके अलावा स्टेट लेवल पे भी जो है वो सर्विसेज होती हैं, उनको भी आप उसी तरीके से जो है एग्जाम से क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन सबसे पहले डिसाइड करिए कि क्या यही बेस्ट है आपके लिए, क्यों बनना चाहते हैं, क्यों आपके दिमाग में आ रहा है, ये बहुत क्लियर करिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर थॉट है। अनुज कुमार, आप मुझसे बात करना चाहेंगे? क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? अनुज कुमार, लास्ट क्वेश्चन है ये। आई हैव टू क्लोज द डे। लास्ट क्वेश्चन। I have a next session at 2 o'clock in a school, so please, I have to leave. Last question. Anuj Kumar, unmute yourself and talk to me. Anuj Kumar को unmute कर दीजिए please. अनुज कुमार, क्वेश्चन पूछिए प्लीज आप। But most musicians don't make money. Okay, beta. So, sir, I want to become a musician, but most musicians don't make money easily. So I'm thinking to do something side by side. I'm interested in arts, but I think I would be able to do science if I put enough effort, and it's much easier to build in science than arts. What stream should I pick? आप कौन सी सिटी से बोल रहे हैं? कौन से क्लास में हैं बेटा? बेटा आप कौन से शहर से बोल रहे हैं? कौन सी क्लास में हैं? Gurgaon. Class 10th. Which city? Gurgaon. Yes, sir. All right. Okay, great. So, if you really believe that you are a great musician, so again, go back to the first episode or second episode where I have in detail explained that if you want to be somebody who's creative and you want to be in creative profession, then there has to be certain data points which need to speak for themselves. So for example, सबसे पहला चीज ये कि क्या आपने सालों साल बहुत म्यूजिक बनाया है? क्या आप घंटों म्यूजिक कर सकते हैं? क्या आप हर दिन म्यूजिक के बारे में सोचते हैं? क्या ये बहुत ही आप पैशनेट है इसको लेकर? पहला।
दूसरा कि क्या आपने पास में जब जब म्यूजिक बनाया है या बजाया है, लोगों ने तारीफ करी है, आपने कॉम्पिटिशन जीते हैं, और वो आपको बार बार ये डेटा जो है स्ट्रांगली बताता है कि हाँ आपको आगे ले जा सकते हैं। तीसरा कि क्या आपने प्रोफेशनल लेवल पे किसी कोच के साथ या प्रोफेशनल टीम्स के साथ इस पे काम किया है, और क्या वो लोग कहते हैं कि आप इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीनों डेटा पॉइंट्स का इकट्ठा होके हाँ में जवाब मिलना। ठीक है बेटा? और अगर ऐसा है तो फिर आप बिल्कुल मत सोचिए कि म्यूजिशियंस बहुत कम पैसा कमाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे म्यूजिशियंस जो नेक्स्ट जो बॉलीवुड में नहीं है या हॉलीवुड में नहीं है, जो नेशनल लीड नहीं अच्छा नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने शहर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे आर स्टिल मेकिंग लॉट ऑफ मनी। आई नो ऑफ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस who are running only music academies, and they are running very successful music academies. They are making lakhs of rupees a month, and the best part is that they are doing what they love doing. So that's the most important thing. Namaste, sir. My last question. Sir, I want to ask which is best option, either doing BSc or engineering or medical. ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको बेटा, जब तक मैं इंडिविजुअली आपको जानता नहीं हूँ, आपके साथ मैंने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं किया। I am interested in so much mathematics. So should I pursue the BSc in mathematics or engineering करना चाहिए? जरूर मैथमेटिक्स में, अगर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप इंजीनियरिंग क्यों करेंगे? फिर आप मैथमेटिक्स में आगे जाइए। बट पेरेंट्स से डैट कि बीएससी के बाद क्या इंजीनियरिंग रहेगा तो बहुत ऑप्शंस रहेंगे, बीएससी करने का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ टीचर्स बन सकते हैं बीएससी के बाद। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे करियर्स हैं। यू कैन बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियन, यू कैन बिकम अ ग्रेट स्कॉलर, रिसर्चर, you can be a professor, teacher, you can be doing many things, statistics, I would say you can be, taking further statistician's job, you can become actuarial sciences, person, you can do lots of things with maths and stats. So please अपने पेरेंट्स को बोलिए मेरे से बात करेंगे, एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग सेशन आप अपॉइंटमेंट अपना लीजिए, बुक करिए, और I will help you, don't worry about it. Okay, so with that, I have to close the session. One last final question, Utkarshini, I leave it to you, and then I have to call it a day. I'm really sorry, guys. एक बच्चा बहुत नाराज है छवि हमसे कि हमने YouTube का कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, तो YouTube के क्वेश्चंस के आंसर्स हम जरूर देंगे, और बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट सेशन भी कोई रखें, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे इस सेशन के बाद, और अगर ऐसा जरूरत महसूस होगी कि हम कोई एक आधा घंटा या 45 मिनट्स का एक सेशन रखें जहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहेंगे जो हमने नहीं दिए हैं इन तीनों सेशंस में, हम जरूर एक सेशन इनका एक्सटेंशन, इस सीरीज का एक्सटेंशन रख सकते हैं। तो छवि और उत्कर्षिणी और अभिषेक, आप लोग प्लीज इसके ऊपर काम करिए और देखिए कि क्या जरूरत ऐसी महसूस हो रही है। सो वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन बिफोर आई कॉल इट अ डे। उत्कर्षिणी, प्लीज। Yes, sir. The question is from Somesh. His question is, if he wants to pursue data science, how can he start from standard 11? What are the right subjects to choose? Okay, so if you want to be data sciences, then definitely one of the subjects you should look at is maths. That's very, very important. Also, you can start doing a lot of online programs. There are lots of online programs on data analysis, data sciences, data mining. Look at those programs. Those short-term programs will give you good enough clarity whether you can really excel in this career, whether you should pursue this career for long term or not. Don't look for those careers because they look very fancy, they are very in at this point in time, or they are the careers, so to say, at this point in time. Please believe in yourself, understand your strengths, take a sneak peek into them, do some short-term programs, and get a complete data around this career, which gives you good enough conviction whether you should go for it or you should not go for it. All right, with that, I would like to call it a day. Thank you so much, everybody. Thank you so very much for asking such great questions. I'm sure in questions के answers ने आपको help किया होगा, और अगर आप फिर भी personalized, detailed service अपने लिए चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे वेबसाइट तक आइए, हमारे नंबर तक पहुंचिए, हमारे काउंसलर से बात करिए, और मेरे तक पहुंचने की कोशिश करिए। We all, my entire team, will be ready to help you, will ensure that you become successful in your life. Okay, so please, Chavi, Utkarshini, and Abhishek, see if there is a need for an extension for 30 minutes of session. We could schedule it sometime very soon, and wish you all the best and loads of success. Thank you so very much. Utkarshini. Thank you, sir, for the. Thank you. Thank you.
All right. Bye-bye, guys. Thank you. Thank you.